visible. Okay, visible. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today our lecture is that we discuss about the finance in education unit number one. This is basically we discuss about how to finance the education and what are the practical implication of financing the education. In this unit, we discuss about the topic that's introduction that government subsidies, consumer ignorance, economics of scale, externalities, perfection in capital, model of financial decision making, productivity efficiency, and bureaucratic model and collegial model. First of all, we discuss about in this topic that government की जो subsidies के बारे में we discuss about the subsidies of the government. It's mean that there are two head of the government. Na? One is the government revenues. We can say that the government get a revenue from different entire of economic sector like government collect a direct tax and indirect tax. जो government tax collect करती है, these are the called the government revenues. The subsidies of the government mean it means that the government spend on the public for their welfare, like for the people. The government give a free health to the people and free education to the people. तो हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अगर उनको सब्सिडाइज करे यानी उनको सब्सिडाइज फैसिलिटीज दे, तो दिस इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सब्सिडीज. Secondly, we discuss about the consumer ignorance. It means that how the consumer tackle and also took a education. If government give a free education to the people, and how the people choose education like government sector or private sector, and how the people respond to get a education due to giving a subsidies government. The people how much the people are willing or able to getting the free education. Third one is that the economics of scale. In this we also discuss about the briefly discuss about the economics of scale. Economics of scale, dear students, it's mean that we can say that if over the combination of input which give us a more and more level of output. अगर हम इनपुट लगा रहे हैं लाइक लेबर एंड कैपिटल इन इकोनॉमिक्स में वो यूटिलाइज द लेबर एंड कैपिटल, तो उसकी वजह से लेबर एंड कैपिटल को यूज करते हुए जो मोर एंड मोर हमारे पास आउटपुट विच जनरेट आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. इसको हम डिस्कस करेंगे लाइक फिर हम अदर सेक्टर की द एक्सटर्नलिटीज की तरफ जाएंगे. वी कैन से दैट there are two type of the externalities. Externalities mean the action of 1 and 2% which affect the whole entire of society. दो बंदों का एक्शन होता है और उसकी वजह से जो सोसाइटी जो है सरवाइव करती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नलिटीज. एंड एक्सटर्नलिटीज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट्स में भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव. लाइक अगर इफ वी वी कैन से दैट वी बिल्ट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहां से जो पोल्यूशन क्रिएट होगी मे बी दीज आर द कॉल्ड द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. ऑन एन अदर एंड इफ वी make a garden, government make a garden in front of many houses, this is called the positive externalities. Like education, government spend education, spend a huge amount of money in education. The people are educated from different entire college and universities. You can say that this is called the positive externalities. But these people, after getting education, move to what another country, we can say that this is called the brain drain. This is called the negative externalities. Imperfection in capital, we can also discuss about the perfection of capital. Government utilize the capital in capital in investment of education and health. Maybe it is perfect or not perfect, because we also briefly discuss about that the factor of efficiency and equality is discussed in this model. फिर हम we discuss about next the models of financial decision making. प्रोडक्शन एफिशिएंसी एफिकेसी के बारे में वो
बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल. So let's we start our lecture with the government subsidies. The case for the government subsidies to education. Economics argument for the government substitute to the higher education usually rest either on the efficiency or on the equity ground. तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट है कि गवर्नमेंट जो होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देयर आर टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वन इज द रेवेन्यू साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर वन इज द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट. सो अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट जो है वो एफिकेसी बेस पे ये जो है सब्सिडीज देगी या इक्विटी बेस पे देगी. अगर गवर्नमेंट को इक्विटी बेस पे देना है तो गवर्नमेंट में गिव अस मोर एंड मोर सब्सिडीज. यू नो देयर आर three entire level of in our society. One is the high class economy and middle class and lower class. तो अगर इक्विटी की बात हो तो गवर्नमेंट को सबसे पहले सब्सिडाइज करना चाहिए लोअर क्लास को, बिकॉज लोअर क्लास इज very very much poor and there are need a huge amount of money for this society. लेकिन अगर एफिकेसी की बात करें तो you know that the rich people are those people who are living in posh areas, their children are educated in well educated institutions. लेकिन अगर उनको भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी तो उससे तो एफिकेसी बढ़ेगी, बिकॉज दे आर ग्रूमिंग अप मोर एंड मोर और उनको थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत होती है. ऑन एंड अदर हैंड अगर गवर्नमेंट इक्विटी की बात करेगी तो गवर्नमेंट को government must be invest in lower or middle families whose income is very less and less as compared to higher families. The efficacy argument state for state interference in the finance of education has its root in welfare economics. So if we discuss about the welfare economics, student basically if we discuss about the general equilibrium and welfare of economics, we discuss about the welfare of human being or economics. According to the Robin education, economics is the branch of science which social science which deal with the welfare of the people. We utilize the resources in positive way for the welfare of the people. तो ये जो एजुकेशन और हेल्थ के प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इफ गवर्नमेंट यूज द एफिकेसी आर्ग्यूमेंट, it say that the blog 1970 says that we government finance the education for the welfare of people, for increase the people human capital which also utilize in future for their well-being. So this is the argument of blog 1917. According to the welfare economics, Pareto optimality is the most efficient allocation of resources. So we basically we achieve the allocation of resources. Allocation of resources का मतलब ये है कि हम हमारे पास there are two types of the resources. One is the labor and other one is the capital. If we utilize these labor and capital on maximum utilization of these two resources, and which we get an optimal point where these resources are also maximum and maximum utilized. These are called the most efficient allocation of resources. These, if we utilize these resources in proper way, like in education, economics of education, we discuss about the teacher and student. The teacher is the one resource and student is the respondent. If government give subsidies to education, and these two inputs like student and teacher, and they are efficiently utilize their skills. Teacher use their skills and student also use their brand and get a more education. So this most efficient allocation of these resources like teacher and student are also come together and join with each other, and these students and teacher allocate more and more resources. After that we get a maximum outcome of the in the shape of human capital. तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली डियर स्टूडेंट सब्सिडीज देने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट अगर स्टूडेंट्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है तो
स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो इतने एफिशिएंटली वे से परेटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें कि वहां से जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो, दिस ह्यूमन कैपिटल इज बेनिफिशियल फॉर अवर सोसाइटी if if it will be achieved under the perfect competition and only if certain condition hold. और ये मोनोपोली के जुमरे में न जाए बल्कि दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन. और परफेक्ट कंपटीशन are those competition in which the number of buyers and sellers, the number of students and number of teachers available in a market. If these number of students and teachers available in a market, the market goes toward the perfect competitive market. And in perfect competitive, the allocation of efficient resources are occur. These efficient resources in future we get a educated human capital, human brain, which are beneficial over society. If these conditions does not hold, there will be market failure and commentally justification for government to interfere in the operation for market. So if there is not perfect competition exist in the market, it means that our market will be fail in future. So this market, why this market is fail? If the number of students and teacher not work together and join together and get a maximum knowledge and will not able to get a knowledge and not human capital created in future, so it's mean that our market is failed. When the market failure occur in our society, so government take a quick action and remove the subsidies of education. तो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेके इन सब्सिडीज को खत्म करेगी बिकॉज दीज सब्सिडीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द फॉर दिस सोसाइटी बिकॉज नो ह्यूमन कैपिटल कैन जनरेट, नो ह्यूमन ब्रेन कैन जनरेट फॉर दिस प्रैक्टिस. अंडरस्टैंड? So consumer ignorance. The consumer ignorance is the higher education would apply if the student and their parents were incompetent to judge the personal advantage or disadvantage of post compulsory schooling. So there are basically two type of student schooling. One is the compulsory student. We may say that this is primary schooling or matriculation, and the non-compulsory schooling mean the schooling which we can say that the schooling after matriculation like FSC, BSc, MSc and so on, 18 year of education and above. So if the people are incompetent and they are also not judge the advantage and disadvantage of post compulsory schooling, it's mean that कि देखिए एजुकेशन जो है ना, बेसिकली एजुकेशन ऐसा फिनोमेना है ना कि जिसमें हम एजुकेशन के अंदर जो है वो इसका कास्ट तो हम वी कैन मेजर द कास्ट ऑफ एजुकेशन बट वी कांट बी मेजर टू can't be able to measure the benefit of this education because there are blind benefit because some are student maybe this is the long run process in education and long run में maybe student जो है long run में वो compete ही ना कर सके और he leave the school and many problems a student face like health problem or injury or death or so what on. तो इनकी वजह से ये होगा कि जो है ना इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग रन है. सो पीपल जो है व्हेन इग्नोर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोस्ट कंपल्सरी स्कूलिंग. तो इसकी एक लॉजिक जो है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट जो फेलियर हो जाएगी उसकी ये वजह होगी कि लोग जो है इग्नोरेंस इग्नोर करेंगे. कंज्यूमर जो है स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इग्नोर करेंगे कि वी आर नॉट सेंडिंग their children to school. जब वो स्कूल में नहीं भेजेंगे तो this is the flaws of education. Although this consumer ignorance may be prevail in respect of primary education, it seems improbable that it would be exist for 18 year of old about the undertaking higher education course. This is some evidence from the side in UK, USA and Pakistan. सो देखेंगे लाइक पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा भी है इशू है कि प्राइमरी स्कूल के बाद भी जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल लाइक सम हम कह सकते हैं कि विलेज एरियाज लाइक इंटीरियर सिंध इंटीरियर पंजाब.
So these अगर इस तरह की ignorance होगी तो this is not the benefit for education, and government give a subsidies to the education sector. This is not beneficial for government to give a more and more subsidies, because the students are not willing to go their schools, and their parents also not participate active participation in this scenario. So this is the not benefit for the benefit for the for our nations and for our government, because the human capital is not generating this practice. So this is not good for the government sense. And these are the cases are also very rare and common in UK, USA, and like Pakistan. Number 2.2, we discuss about the economics of scale. We turn next to question of economics of education, scale in education. Like we can say that we can discuss that the economics of scale mean the number of unit of output which give us a more level of output, number of unit of the combination of inputs which give a more level of output. This is called the economics of scale. But in economics of education, we discuss about the allocation of efficient resources like teacher and student. If they are fully concentrate in their field of education, and they get a more and more education, after that this education is very good for our society, and our society will beneficial from this scenario. This concept of efficient resource allocation boil down boil down boil down to the proper that the all resources should be equally productive in every possible. Clearly, this condition is not satisfied if the education output rise as the result of moving resource from small institution large one. That is the situation where economics of scale realize. So we can say that there are many type of schooling in our many stage of schooling in our society, like primary, middle, secondary, higher secondary, and bachelor, master. So these type the input of primary is we can say that the house old child and a newborn baby when he reach the age of 5 and 6, 6 or 7 year, and the parents will parents जो हैं वो उसको स्कूल में भेजते हैं. After the middle input of middle is primary education, and the input of secondary education is middle, and higher secondary is secondary education. If the input of we can say that primary education, there are enrollment ratio is we can say that 100 students. But if the enrollment ratio is going toward decline and decline, after second step, this ratio is going toward the downward from 100 to 80, and in the secondary school system it goes down 50, higher secondary 30. It means that the economic of scale does not exist in this the diseconomics of scale, because the government give a subsidies in every stage of education, but the many students who fight from voluntarily or involuntarily forgive the education and exit the education, and they are working from some other areas, like they are working on like child labor and so on. तो इसकी वजह से भी जो है हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में जब एक स्मॉल इंस्टीट्यूशन से रिसोर्सेज मूव करते हैं, यही जो एजुकेटेड पर्सन है मूव करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंस्टीट्यूशन टू लार्ज वन, तो अगर इनकी रेशियो जो है डिक्लाइन करेगी, तो वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को भी रियलाइज करते हैं. Externalities. The third one we discuss about the externalities 2.3. Externalities mean, and I can also briefly I have discussed about the externalities, that action of one or two person which affect the whole society. Maybe it's negative sense or positive sense. In education, maybe also externalities are also very
in publics, we can say that the externalities in education system, we can say these are the positive externalities because the graduate come from the institution, and these graduate play a pivotal and role in our society, which is very beneficial for our society. And these human capital can generate a uh, different ideas about our society, how will society uh, survive in our uh, country. The question of externalities in education has been frequently explored in the literature. ब्लग 1970s 1970s में ब्लग ने रिसर्च किया, उसने भी क्वेश्चन रेज किया कि एक्सटर्नलिटीज इन एजुकेशन हैज फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्ड। इसमें भी की जाती है कि एजुकेशन गेन करने के बाद मे बी द आफ्टर सब्सिडाइज द गवर्नमेंट एजुकेशन टू देयर सोसाइटी, it may be create a positive externality or negative externality. So there are two aspects of the question. उसकी जो research है उसके दो question raised हुए हैं, that the economist has focused on what are the education externalities and के education externalities हैं क्या, and are they are sufficiently important to grant public subsidies. जो हम public subsidies दे रहे हैं, these are the sufficient for these externalities. तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, मे बी हमारे पास private goods and public goods. There are two types of goods. The private goods are those goods which are non-rival but excludable. यानी ये हमारी पहुंच से दूर होती हैं, जब ये उस वक्त तक हमें नहीं मिल सकती जब तक कि हम इनको गेन नहीं करेंगे, हमें पे करना पड़ेगा फॉर दीज गुड्स। The public goods are those goods which are rival and excludable. तो नॉन एक्सक्लूडेबल के ये गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो राइवल भी होती हैं, हर किसी के एक्सेस में होती हैं, और कोई सी बंदे को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं इन गुड्स में। लाइक पार्क में आप जा रहे हैं तो पार्क है जो गवर्नमेंट का है, तो उसमें आप किसी को, ये सब के लिए राइवल भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल है, वो 100% जो आप इसमें जा सकते हैं। और अनदर हैंड जो प्राइवेट गुड्स है उसमें जो है आप जो है ना आपको अगर इजाजत मिलेगी, if you somebody can give you a permission to enter this garden, maybe this is a private level garden, तो वहां पे प्राइवेट बोलता है। तो आप देखें इसके अंदर जो है एक्सटर्नलिटीज जो है प्राइवेट में वो 0% होती हैं, बिकॉज पीपल आर आल्सो गिव अ पेमेंट to the honor for getting education or some other luxury satisfaction. But in government sector, you can say that there are 100% chance of externalities because government can subsidize the people and they get a free of education from any entire society. This is maybe the 100% externality. Understand? Externalities and public goods. अब देखें public goods are those goods which are non which are rival and non-excludable. जो rival भी हैं और excludable नहीं हैं, these goods are called the public goods. Clearly, education is not an example of public good. Education जो है वो public good की example नहीं है, क्योंकि education can be bought it consumption by reducing the consumption available to other. Both the inputs and output of the education system are directly or indirectly sold to the market, and price of teachers, students and building reflect to the some extent their relative scarcity. तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन इज नॉट public good, which is private good, which is totally borrowed, and we pay inputs, we pay inputs like teacher inputs, and we give a teacher salaries and students and building reflect the some content. Student may be also a pay a cost of this education. This is called the opportunity cost. We are will be discussed in next 2 or 3 slides that the opportunity class student bear a best goals for alternative. तो उसके लिए स्टूडेंट को भी बियर करना पड़ती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट scarcity because we pay a large and large amount of money on the education. So we can also say that frequently say that the education, yeah, this is also called the system of scarcity. So economics we discuss these
लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो स्कार्सिटी का इशू इकोनॉमिक्स में भी पाया जाता है, और इन इकोनॉमिक्स इन फाइनेंस इन एजुकेशन के अंदर भी स्कार्सिटी का इशू है, बिकॉज एजुकेशन नो नथिंग इज फ्री in the world. We can say that education is not free, good for the people or entire society. We pay some of cost on the education. तो जो एजुकेशन के ऊपर कास्ट करते हैं, तो एजुकेशन इज नॉट अ पब्लिक गुड, इट इज प्राइवेट गुड, बट नॉट ऑल द बेनिफिट ऑफ हायर एजुकेशन आर नेसेसरी confined to those who are paid for it. तो ये भी हो सकता है कि मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट के एजुकेशन की कास्ट और बेनिफिट होते हैं। कास्ट वी बियर अ कास्ट इन present value, but we are to sacrifice the consumption of other goods because we pay a huge amount of fee in universities and many institutions. But the benefit of education, we can't be predict how much we get a benefit from higher education, because it is an unpredictable phenomenon. Education is the long run process in which we can't be 100% say that we get a job after graduation or post graduation, because there are some accidents, incidents and events are occur in our society, because maybe we can not get a full confined benefit from the education paid for it. For example, the university graduate who develop a new vaccine for which he get a paid, but which bring much large benefit to the people throughout the world. मे बी अगर स्टूडेंट एक वैक्सीन की जो है आफ्टर गेटिंग एजुकेशन वैक्सीन जो है वो इन्वेंट करता है, तो दिस वैक्सीन इज वेरी बेनिफिट फॉर द सोसाइटी होल द वर्ल्ड। बट हायर एजुकेशन is having adult, but higher education having a dull. So higher education may be positive, someone may be positive externalities are also negative externalities. Let's move to another one, is that the imperfection in the capital and insurance markets. Maybe this is also a imperfection market, having dealt with the externalities and public goods together, we arrive at the last possible cause of market failure. Maybe this happens that there is no perfect competition exists in a market, and the market fails because large number of students and the teacher not available in our society. The government will give a more and more subsidized education, but there is no output of education getting from this sector. Imperfection in the capital and insurance market, because we can also say that student के ये कैपिटल और जो एजुकेटेड और जो जो हमारी इंश्योरेंस मार्केट है, इनमें इनपरफेक्शन इसलिए भी हो सकती है कि वी आर लिविंग एट एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट श्योर अबाउट द एजुकेशन, इफ वी गेट एजुकेशन from different types of educated institution, maybe we are getting a higher job or not, it is unsure for us, because a non-slave society prohibits people from selling right to their future labor services. Individual cannot offer a loan on their personal services and collateral against the loan to finance the personal investment in schooling. If the personal return to that investment are expected with the perfectly certain. तो अनसर्टेनिटी का इशू है डियर स्टूडेंट्स। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज लुक लाइक अनसर्टेनिटी इफ द गवर्नमेंट सब्सिडाइज देयर एजुकेशन, द गवर्नमेंट अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस स्टूडेंट, दे he may be continue his and her job or not। तो ये हमारे पास इसके जो फ्लॉज थे जो हमने ब्रीफली डिस्कस किए कि द का केस फॉर गवर्नमेंट गिव अ सब्सिडी, और सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट को ये इन चीज़ों को अंडरमाइन करना पड़ेगा कि दीज थिंग्स आर नॉट, ये गवर्नमेंट को पहले इनके ऊपर जो है ना अंडरमाइन करके इनको एस्टिमेट करना पड़ेगा। व्हेन गवर्नमेंट एस्टिमेट these cost and benefit after these estimation, government took a bold step forward
education. So these externalities and public good. Understand, student? Understand? Now we move to the models of financial decision making. कौन कौन से मॉडल जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के लिए. These first of all we discuss about in this lecture that government give a intersector with the different subsidies to the people. वो हमने डिस्कस किया और सब्सिडीज के बाद हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो उसको ये इन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है. अब उसके लिए फिर ये सब्सिडीज देने के लिए डिफरेंट जो मॉडल हैं वो डेवलप किए गए हैं कि हाउ वी कैन गेट अ मैक्सिमम मोर एंड मोर एजुकेशन. So the production efficacy and exchange efficacy इसको देख के हम first of all we develop a model that there are basically three different model of the way in which the education institution can be financed. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट को फाइनेंस गवर्नमेंट करे तो उसके लिए फिर इन तीन मॉडल्स का गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट गिव अ सब्सिडीज टू द students in a financial institution or financial institution giving a subsidies to the education institution. The one is the bureaucratic model and second one is the collegial model and the market model. क्लॉस 1984 क्लॉस ने ये मॉडल बताया था कि we discuss about the these three models like a bureaucratic model, collegial model and the market model. Which model is applied will have a implementation for efficacy and equity. तो इनमें से कोई एक मॉडल जो जो है वो उसको हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं we can get efficacy and equity. And we begin to this section with the two aspects of efficacy: production efficacy and exchange efficacy. There are two aspects of production efficacy: technical efficacy and economic. We also discuss about there are two type of efficacy. One is the technical efficacy and other one is the economic. In technical efficacy, we can say that we hire those type of teachers which are highly educated and which are educate the student in very economic, very high level. And technical efficacy mean the over human capital which is generate from this education. This human capital is very beneficial for our society, and highly and trained teachers are also adequate to the these institution. And economic efficacy, we can say that cost minimization. Cost minimization mean we can get a limited start and staff and the staff is very highly effective but in limit में हम उसको रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी कास्ट जो एजुकेशन के ऊपर कास्ट हो वो लो से लो हो. जब एजुकेशन के ऊपर कास्ट जो होगी लोअर देन लोअर होगी तो इसमें that we can get a technical economic efficacy. Technical efficacy is achieved when inputs in educational process are combined in such a way as to maximize the output. कि देखें टेक्निकल एफिकेसी के हमने ऐसी एफिशिएंट इनपुट को यूटिलाइज करना है लाइक अ टीचर एंड स्टूडेंट which is very beneficial for the society. However, the input cost money and since education budget are limited, it is desirable to produce the education output at lower price. और हम इतनी मॉनेटरी कास्ट को कम से कम रखें कि इतनी लिमिट में रखें कि हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो वो बहुत कम कास्ट में हमें जो है ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो. दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एफिशिएंसी. A movement to the position where the cost of producing an educational output solves is moving toward the economic efficiency. तो उस पॉइंट को हमने मूव करना है जहाँ पे हमारी जो है वेयर और एजुकेशनल कास्ट इज मिनिमाइज और हमारी जो आउटपुट हो वो मैक्सिमाइज हो. वहाँ पे हमारे पास टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोथ आर एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट. So in this graph, we can say that an example to the economic efficacy to provide the figure. If the line CC in the figure 2 represent the relative cost of the two inputs, this line is called the budget line. We can say that CC line is the budget line
Budget line means the input cost. There are two type of the input we utilize in this model. One is the input of teacher time and second one is the inputs of student time. स्टूडेंट भी हमारे पास जो हैं वो इनपुट के तौर पे हैं, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंड द टीचर भी इनपुट के तौर पे रहे, इनकी भी एक कॉस्ट है जो हम मॉनेटरी शेप में पे कर रहे हैं। तो अब इन दीज इनपुट, इसकी जो प्राइस है वो P1 है और इसकी इनपुट T1 है टीचर। स्टूडेंट की इनपुट जो है वो S1 है और इसकी प्राइस जो है वो PS है, यानी प्राइस ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी का। This is the production function. We can get the output function. This is called the isocont. We can say that this is the output level of output we generate from the student. So here is not efficient point at Y level because we bear a higher and higher cost at that point in Y. Q and X are these points are not feasible point and we can't be reach at the point because over maximum utilization resources at line CC. तो इन पॉइंट तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये वाई पॉइंट भी हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर अस बिकॉज इट इज द हायर कास्ट पॉइंट। So the point Z is our economic point where over ISO count number of production जो है हमारी ISO count है जो आउटपुट जो स्टूडेंट की जनरेट हो रही है वो हमारी ISO कास्ट के साथ टेंजेंट कर रही है, जहाँ पे फुल कास्ट मिनिमम कास्ट पे हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। तो this graph shows that our economic as well as the technical efficacy at point Z where the ISO count the output of student tangent to what the ISO cost. At that point, we get a maximum output generated from our society. Understand, student? Time and student time. I, a move from Y to Z represent an increase in the economic efficacy. For it now costs less to produce the unit of output. To summarize, where the output is maximum per unit of input, we have a technical efficacy, and where it is maximized at least cost, we have economic efficacy. So here we can get up two efficacies. One is the technical, another one is the economic. Curve Q represent the technical efficient way of the producing the student output. At any point on the curve is called the technical efficient. Where curve Q is called the tangent to the line CC, we have economic efficacy for student output is being maximized at lower cost. Other point on the Q such as Y is technically not but not efficient point. तो ये हम मैंने आपको अभी बताया कि Z point Z is our efficient point where we can get a more and more efficient table. The second model we discuss about that the bureaucratic model. The bureaucratic model says that under this bureaucratic model, the financial decision are taking at high political level. जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे की जाती हैं और पॉलिटिकली जो होते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में हमें सब्सिडी देनी चाहिए और किस एरिया में हमें सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। तो वो जो पॉलिटिशियंस और जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि यूजुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी decide both the resources available to the higher education sector and the rule according to which these resources are distributed between the institutions and within the institution. कि कौन सा इंस्टीट्यूशन के दरम्यान में वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा विद इन द इंस्टीट्यूशन हमें करना चाहिए। The looseness and the flexibility of the role will be determined the freedom of action of the institution, department and teachers. But this freedom is subject to be central control and can always be reduced the tightening of rules. तो वहाँ पे इस जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है
वो डिसाइड करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि विच इंस्टीट्यूशन इज मोर desirable and where we invest more and more about our money. Element of this model can be also found in more Western European countries. इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस मॉडल के वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं. थर्ड मॉडल we discuss about the collegial model. The collision model contrasts sharply with the bureaucratic model. उसी तरह का ये मॉडल है. In that institution are financially independent. ये वो कहते हैं कि bureaucratic model में we discuss about that the bureaucrats and high power government and central government decide which institution, किस इंस्टीट्यूशन को हमने फैसिलिटेट करना है और फाइनेंशियली उसको साउंड करना है. बट कॉलेजियल मॉडल ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट हो, उससे अपना फाइनेंस जनरेट करें. whereas the consequences of past endowment and they are therefore free to manage their own affairs at will. वो आप खुद अपने आप को जिस तरह लाइक कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं फाइनेंशियली तौर पे वो अपने आप को खुद से जो है एबिलिटी करते हैं, वो फंड जनरेट करके वो अपने जो है यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मीट करते हैं. The merit of this system is academic freedom that is thereby achieved from outside influence. However, it may be that this ये मॉडल जो है वो कॉलेजियल मॉडल हमारे पास है, जो ये कहता है कि जो है एजुकेशन जो है उनको इंडिपेंडेंटली उनको फ्री किया जाए. और दीज एजुकेटेड इंस्टीट्यूशंस आर फ्री and they make a decision on their own will. Next, the market model. मार्केट मॉडल बेसिकली स्टूडेंट ये कहता है कि हम जो डिसीजन करें वी मेक अ डिसीजन ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट. The demand is supply mean the in this scenario we can discuss about the supply mean the teacher supply and the demand mean the demand for the student. इसको हम डिस्कस करते हैं. In the both collision and bureaucratic model, power is ultimately vested in body represent a government or university which allocate the resources to within the education. तो अगर हम ब्यूरोक्रेटिक या कॉलेजियल मॉडल की बात करें तो इसमें वो कहते हैं कि अल्टीमेटली जो पावर होती है वो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के पास होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करे और कहाँ कहाँ उसको फंड जो है तो देना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अपने करने चाहिए. These exist a third model of resource allocation in higher education where control is more and more diffuse and indirect. तो ये जो these model are also allocated ये implement हो सकते हैं हायर एजुकेशन में where the institution are independent like यूनिवर्सिटीज हैं या यूनिवर्सिटीज की जो इनकम होती है वो अपनी होती है तो वो जनरेट करके. दिस इज सो कॉल्ड द मार्केट मॉडल एंड अंडर इट यूनिवर्सिटीज इनकम इज जनरेट बाय सेलिंग इट्स सर्विसेज. तो ये इसमें ये है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो देखें सप्लाई दे रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं लाइक टीचिंग एंड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी दे रही हैं और स्टूडेंट जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं डिग्रीज की. तो वन इज द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी एंड अदर वन इज द सप्लाई. जब सप्लाई और डिमांड साइड की इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी तो वी मे से दैट दिस इज कॉल्ड द we can say that the market model. To where the wish to buy. In this model, the power is shifted to consumer and to unit that produce it, the services. तो इनके दरम्यान में पावर का जो है आपस में इनका जो है कोलिजन होगा. One side is the students and other side is the universities. Universities maybe supplies the education on cost and the demand side of education is related with the students. If the student demand their education, the price will be high and student pay a more and more price. On another hand, if the universities can supply these degrees and more universities available in our market, the price is low, that the supply is excess as compared to demand.
The characteristics of such a model is that the resources will be allocated according to their incentive structure. तो ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि जितना इंसेंटिव मिलेगा, जितना बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को भी और यूनिवर्सिटीज को भी. तो दिस मॉडल इज वेरी मच इम्प्लाई फॉर दिस area. If the teaching is more highly rewarded than research, university employee will be devoted more their time and energy to teaching. रिसर्च के मुकाबले में यूनिवर्सिटी जो है मोर एंड मोर टीचिंग कराएंगी और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर एंड मोर जो है एजुकेटेड होंगे यूनिवर्सिटी. फाइनेंसिंग द हायर एजुकेशन. अब पहले हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय हायर एजुकेशन एंड व्हाट आर द मेन इंस्टीट्यूशन व्हिच आर आल्सो गवर्नमेंट गिव अ सब्सिडी टू देयर एजुकेशन. तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थे. वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इफ गवर्नमेंट गिव अ सब्सिडी टू द higher education sector, what are the main problem exist in this scenario. उसके बाद हमने मॉडल पढ़े कि these model are implement for government give a subsidies to their financial institution. And अब हम पढ़ेंगे कि higher education को how we can finance the higher education. तो 4.1 institution based funding. The control that are attached to fund provided to institution in higher education may be well affect the efficacy with which the education provide. तो ये फंड जो है बड़ी एफिकेसी के साथ, इक्विटी के साथ नहीं बल्कि एफिकेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ दिए जाएं. Will be briefly explore such a control. First, we shall explore the implementation of allowing the investment when the awarding the grant to institution. And second, we shall consider the implication of awarding money to institution in the form of fee income rather than free grant loan. तो ये देखें कि एजुकेशन को जब हमने इन्हांस करना है तो दो स्टेप गवर्नमेंट शुड बी टेक अ टू स्टेप टू गेट अ फाइनेंस इन हायर एजुकेशन. वन इज इसमें एक्सप्लोर करेंगे which type of variety we can get from this institution and which type of human capital we generate at this stage. And second one, the government you have lump sum grant. No, the government shouldn't give a lump sum grant to the uh, institution. Rather than government give a grant in shape of their fee income and other one. इस तरह से इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट जो है फंडिंग कर सकती है. लोन इन मैनी कंट्रीज थ्रू ओवर द वर्ल्ड. बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वहाँ पे इन Scandinavia and North America in particular, loan scheme has been introduced to finance of students in higher education. उनको लोन दिया जाता है जैसे पाकिस्तान में भी इन PMLN गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को लोन दिया जाता था कि वो टू गेट देयर हायर एजुकेशन. उनकी फीस वेव की जा रही थी, फी वेव हो गई थी. तो इस तरह की फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड द UK, there are proposal to introduce a loan scheme for their student in higher education. These proposals give a rise the headed debate that debate in which both the advocate and opponent of the scheme have been applied. तो जब ये स्टूडेंट को लोन की फैसिलिटी दी जाएगी जैसे पाकिस्तान में कर्जुल हसना एक फैसिलिटी लोन की राष्ट्रीय PMLN के दौर में गवर्नमेंट में दी जाती थी. तो फ्री ऑफ कास्ट लोन देंगे तो लोन की वजह से जो स्टूडेंट मूव टुवर्ड द हायर एजुकेशन एंड दे गेट अ मोर एंड मोर एजुकेशन. These educated students will be the future of human capital in our country, and it is the best way that government give a loan to the student. A government institution like North America and Canada give these loan to their students. Equal, exactly equal to the net cost of society of last student. This is the illustrated in figure 4 where the social marginal cost is exactly equal to social margin benefit. One is the private margin cost and other one is the, here we discuss about the social marginal cost and social. So because government pay a subsidies to the student, government also can took a tax from different entire society as society. तो वो direct and indirect tax की shape में government जो है वो taxes ले रही है.
और ये टैक्स जो है गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेगी इन द शेप ऑफ स्टूडेंट फीस आर गिविंग अ लोन टू स्टूडेंट। तो उसका सोशल मार्जिन, सोशल बेनिफिट जो है, वो सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट वो नेगेटिव साइड पे, डाउनवर्ड स्लोप है, और सोशल कॉस्ट पॉजिटिव है। कॉस्ट जो जो आप बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट नंबर। तो देखें कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो सोशल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन दीज आर द बेनिफिशियल इन फ्यूचर, ये सोशल मार्जिन बेनिफिट भी हमें एक्वायर होंगे। दीज डाउनवर्ड स्लोप्स से दैट एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज डाउन एंड डाउन, जब स्टूडेंट पढ़ लिख जाएंगे तो ये मार्जिन बेनिफिट हमारे पास इनकर होंगे एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। The government should increase the students to support if S star is below to S double star. Support करेगी तो reduce it if it is above. However, the social marginal cost may be artificially inflated because the institution has been funded in the past in a way that the trend to encourage the surplus capacity and excessive research activity at the expense of teaching facilities. तो ये जितनी कास्ट गवर्नमेंट देगी उसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोर होगी, तो उसकी वजह से ये होगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। इक्विटी एंड एफिकेसी, वी फर्स्ट टर्न टू इक्विटी आर्गुमेंट। इक्विटी की मैंने पहले आपको बताया कि वी कैन से दैट द इक्विटी मीन that we have a three class in our society. One is the higher class, middle class and lower class. तो लोअर क्लास को हम इतना उसको फैसिलिटेट करें कि हायर क्लास के जो है टू एंड टू थर्ड, तो जब ज्यादा क्लियर करेंगे तो इसको इक्विटी कहेंगे। और इक्विटी की वजह से क्या होगा, देयर आर टू aspect of equity in this regard. The first concern with distribution of cost and benefit to higher education. The second one is focus on the way in which the loan will be assessed the higher education. Point we have already touched on. तो हम देखेंगे कि एफिकेसी की बात करेंगे तो हम कास्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हायर एजुकेशन के ऊपर। सेकेंडली हम फोकस करेंगे ऑन अ वे इन विच लॉन विल बी इफेक्ट, हायर एजुकेशन से हमें जो है ना कितना एफिकेसी हासिल हो रही है। सबसे पहले इक्विटी की बात करेंगे तो इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कॉस्ट की और सारी सोसाइटी को देंगे। एफिकेसी का मतलब ये है कि वो जो स्टूडेंट है कैन गेट अ हायर एजुकेशन फ्रॉम दिस सिनेरियो, और कितने स्टूडेंट जो है इन्होंने उसमें उन्होंने इससे बेनिफिट हासिल किया और दे कैन गेट अ हायर एजुकेशन एंड दे dissolve their self in a society and very beneficial for the society. This is the efficacy. अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे इक्विटी और एफिकेसी की बात हो रही है, तो वी कैन से दैट दीज आर द बॉक्स वन वन वन। इक्विटी की हम बात करें तो हमने तीनों को इक्वलिटी, तीनों को इक्वल एक एक बॉक्स दिया हुआ है, और इसमें जो सबसे स्मॉल चाइल्ड है वो देख ही नहीं पा रहा है क्रिकेट मैच को, उससे जो अबव है वो देख रहा है, और उससे अबव वो दोनों जो है उनके लिए ये विजिबल है। बट इन स्मॉल केस में हम इक्विट को देखें तो वो नहीं है। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो वो यू कैन से दैट, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोसाइटी की जो लोअर क्लास है, अगर आप इसको अगर इस तरह देखेंगे, दिस मैन, द टॉल मैन इज कॉल्ड the elite class of economy. This is the middle class and this one is the poor class. तो अगर हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो इन्हों को एक एक बॉक्स दे दिया हमने, मिडिल, पुअर और हाई इनकम वाले को। बट इक्विटी की बात करें तो हमें जो है ये जो हायर इनकम वाला पर्सन है इसको तो हमें वेव ऑफ करना चाहिए। ये जो मिडिल फैमिली का उसको एक देना चाहिए, और जो लोअर फैमिली का पर्सनैलिटीज हैं उनको मोर एंड मोर बॉक्स देके उनको इक्वल करेंगे, जिस तरह वो एक सोसाइटी के अंदर सरवाइव कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी beneficial for you. I hope this is very beneficial for you in entire different sectors.
Sana, can you understand this lecture? Sana, please, if you attach with Microsoft, please tell me, are you understand? Sana, where, Sana Asad, where are you? Hello?